Hey guys, we are back with episode 55 of AC Valhalla. So लास्ट एपिसोड में फाइनली गुथरुम और उबा मिलके जो किंग एल्फ्रेड है, जो आखिरी स्ट्रॉन्ग किंग इंग्लैंड का बचा हुआ है, उस पर हमला बोल देते। तो एवॉर भी ऑब्वियसली हेल्प करने आ जाता है, बट उबा को किंग एल्फ्रेड के लोगों ने मार दिया, ऐसा खबर मिली। एंड एक्चुअली में वो मर गया है, जो क्योंकि बाकी लोग भी ऐसे ही बता रहे थे। तो एवॉर, गुथरुम और उसके बाकी जो भी एलाइज थे, इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया है। तो जो भी प्लानिंग का पार्ट था वो पिछले एपिसोड में कवर हो गया, एंड ये एपिसोड में वो हम एग्जीक्यूट करने वाले और फाइनली किंग एल्फ्रेड को हराने वाले जाके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट, बाद में देखते हैं सब कैसे होता है आगे। फाइंड एंड कन्फ्रंट एल्फ्रेड। ओके, तो सब अपने अपने जगह ले चुके हैं। हमारे एलाइज जो है उनको जो जो करने को बोला है वो लोग कर रहे हैं। तो हमें बस एल्फ्रेड को ढूंढ के मारना है। मुझे लग नहीं रहा 1-on-1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अल्फ्रेड बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, तो कोई ना कोई उसका बॉडीगार्ड होगा 100%। है, इसके सामने से इतने लोग भाग के गए, इसे दिखे नहीं क्या? ओके, Let's smoke the rat out of his guard's house. बढ़िया। तो हमें ढूंढना है एल्फ्रेड किधर गया। फाइंड एंड कन्फ्रंट एल्फ्रेड। ओके, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इधर। तो ऑब्वियसली वेसेक्स का किंग है तो सिक्योरिटी तो ज़्यादा होंगी। मेरे हिसाब से ये बड़ा ऐसा जो बिल्डिंग है इसके अंदर होगा एल्फ्रेड। यस, इसके अंदर ही है। हमारे साथ कौन कौन है? ये सोमा है। ये कौन है? नो आइडिया कौन कौन है। गया, बढ़िया। ओह, झंडा गाड़ दिया उसके सीने में। नाइस। Alfred! Face me, and I will spare the last of Wessex my torch! Did you think my king would turn his back on you, Eivor, when your knife is smeared with the blood of Wareham? Stand aside, Goodwin. I come for Alfred. Alfred is long gone, and this good Christian feast, a cup of honey wine, to trap some wasps. Where is he? Calling his allies to his side, all those who wish to see Wessex under one god. Okay, तो ये ट्रैप के लिए था हमारे। Deluded farmers and godless fools. At least I wouldn't leave them to die as I scurried through the corn husks like a rat. You have no understanding of duty, the loyalty I freely give. His plan for England, for the world, is worth the cost of my life. Then sing your tuneless hymns. Okay. इसे मारना पड़ेगा। इसकी हमने हेल्प की थी एक बार। ओके, अपने से डबल साइज का शील्ड और तलवार लेके आया ये। Such endless fury. It does not matter if I die as long as Alfred is safe. Your life means so little. Hellfire! क्या कर रही? ओह, आग लगा दी। व्हाट द फक? नाइस। ये ले। एक और बार स्ट्रॉन्ग। ये हो द फक, क्या कर दिया इसने? स्मोक बॉम्ब। ओके, खत्म है, ज़्यादा लाइफ बची नहीं है इस पे। आ जा। नाइस।
ओह, अभी अल्फ्रेड किधर भाग के गया? अभी से जाके ढूंढना पड़ेगा। You are beaten, Goodwin. Beaten? No, not so. By my death, my lord may live. Alfred used you, fool. He threw you in my path. For what? He only delays what is inevitable. Kill me then. It makes no odds. For here you stand, bloody and breathless, no closer to my king, no closer to his throne. This island will never be your home, Eivor. You will not subdue her with vicious force, or win her with cocksure words. We Saxons will always stand firm, shoulder by shoulder against thieves and tyrants, whose envious eyes fall upon England. I will kill you. I can still use you yet. ये करते हैं, ये अगर किया तो डेफिनेटली से मार देगा, लेकिन ये क्या तो हो सकता है आगे कोई इंटरेस्टिंग एनकाउंटर हो। No, I will use you as you used me. A few hours in the company of my men, and you will lead us to your Sparrow King. That I cannot allow. ओके, सुसाइड कर रही है। बढ़िया। ओके, तो अभी अल्फ्रेड को किधर? ओके, ये ट्रैप भी तो था। ऑब्वियसली बाहर लड़ रहे होंगे हमारे एलाइज, जाके उनकी हेल्प करनी होंगी। Men of Wessex! They came from every house and hovel! Soma, fall back! For alive! ओह शिट, फक। For glory! Soma! ओह, No! सोमा इज डेड। ओके, अगर सोमा मरी है तो चांसेस है कि हमारे दूसरे एलाइज भी मरे। फक। तो मुझे इसी के बारे में वेलका हमें वार्न कर रही थी कि आखिरी ये तो आपको अगर याद होगा तो पिछले एपिसोड में वेलका ने हमें वार्न किया था इधर नहीं जाने करके, बट ऑब्वियसली गुथरुम ने समन किया था सारे वाइकिंग्स को, तो हमें जाना ही पड़ेगा, हमारी ड्यूटी थी वो। ओके, बढ़िया। Lufina is to the west looking for Alfred. Help your allies, okay? Guthrum is along the longhouse securing Thanes. Broder is on the east gate capturing. Okay. ये पास में है, ये कौन है? सबसे पास में जो इसे हेल्प करते हैं। See Alfred! No, but your Saxon boys were ambushed. One lays wounded. Hold these men back! I'll find them. कैरी हुंडोल्ड, हुंडोल्ड को क्या हो गया? What the fuck, हमारे सारे एलाइज मरने वाले हैं क्या? Come, get up! This is no time for weep wailing. I cannot. And there is a blackness closing in around my eyes. हाँ, हुंडोल्ड भी क्या लग रहा? Hunwald, listen to me. You survived the Battle of Bottleston. Do not let this scratch best you now. I'm so cold. Has winter come so soon? You will warm yourself with mead and dancing yet, my friend. Perhaps not, Eivor. It may be I will sit beside my father soon. Will he be proud of me? He will pull you to his breast, sob bright words of welcome, and tell you no man ever had a worthier son.
I am glad to have known you, Eivor. My truest. ओके, तो हमारे 2 एलाइज ऑलरेडी मर चुके हैं। उडवर्ल्ड भी मरा, सोमा भी मर चुकी है। तो ये इसी के बारे में, यही अनहोनी के बारे में वैल्का ने वॉर्न किया था। There was nothing Eivor to को। check on Guthrum at the feast hall. ये स्पीयर बहुत मस्त है। नाइस। अबे क्या नाच रही है, निकल। ये और इधर खड़ा है। ओके, ये कैसे बच गया? नाइस। Guthrum, I need you fighting with the rest. These men will not surrender! And one little cockflogger barricaded himself behind that door there! I will find a way in. Must be blocked from the other side. ओके, अच्छा ये, अच्छा ऊपर से ये तो रहा रास्ता। ओके, निकल यहाँ से, निकल। बढ़िया। अरे ये एक खुल गया। ओके, आजा अंदर, इसको पकड़ के लेके जा। तो ये कोई नोबल मैन होगा एल्फ्रेड का खास कुछ। इसको भी लेके जाके बाहर रखते हैं। Need to see if Broder has taken the garrison. Good work, Guthrum. I hope the rest have fared as well. इसको इधर ही छोड़ना। ओके, सड़क रास्ते से। अबे यार क्या है ये, रास्ता रोक के खड़ा है। एवोर ऊपर भी नहीं चढ़ रहा है यहाँ से। फक, हम अटक गए शायद, ग्लिच आउट हो गए इधर। थोड़ा ऊपर चढ़ जा, चढ़ जा ऊपर। हाँ ऊपर चढ़ जा, बढ़िया। ओके नाइस, फाइनली। ये भी ले लेते हैं इधर से। एक वेपन मिला है, बाहर आ गए हम। ओके, तो अभी फाइनल किसके पास जाना है? ब्रॉडर। ओके, ब्रॉडर के पास जाने। ब्रॉडर इज एट द ईस्ट गेट्स कैप्चरिंग द गैरिसन। ओके, 156 148। ओके, ज़्यादा दूर नहीं है। Kill you! All the saints die! Curse you! गया। Good edge on you! Broder, what can I do? Eivor! The garrison has more defenders than we hoped! My men are being slaughtered! I will find a way to open the gates from the inside. अंदर से? ओके, अंदर से को। अच्छा ये रहा, ये ट्री से हम चढ़ सकते हैं अंदर। बढ़िया।
नाइस। इधर इसका सर भी काट दिया। गेट तोड़ दिया हमने। सिक्योर द गैरिसन। ये बहुत उछल रहा है, मर गया। नाइस। ऊपर एक दो बचे हैं शायद। नहीं, ऊपर कोई नहीं है। ये रहा एक और। That is most of them. Make sure the garrison stays under our control. I need to help the others. अब क्या करना है? Regroup with your allies. ओके, तो फॉर्चुनेटली बस दो ही लोग मरे, हुंडवाल्ड और सोमा। हाँ, सोमा का कैरेक्टर मुझे पसंद था, बट ओके। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये एक्चुअली में स्टोरी वैसी लिखी हुई है, किसी को बचाने का ऑप्शन नहीं था। देखते हैं कौन कौन बचे हैं। हो सकता है और कोई भी मारा हो, हमें पता ना हो। उबा पिछले एपिसोड में मर चुका था, वो हमें दिखाया नहीं है। बस ऐसे पता चले कि उबा रैग्नारसन को सैक्सन की आर्मी ने, जो किंग एल्फ्रेड की आर्मी, उन्होंने हरा दिया। निकल यस। सबको एक साथ मारेंगे। बढ़िया। ओके, इधर और लोग हैं। These kings defy our god and king. नाइस। मार्क ऑफ डेथ बहुत अच्छी एबिलिटी है जो एरो की है। हम मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ मार सकते हैं। बस हम जब वो कर रहे हैं फोकस, तो हमें कोई अगर किसी ने मारा तो वो एबिलिटी वेस्ट हो जाएगी। इतने बड़े बड़े शील्ड टूट ही नहीं रहे। इसको रिवाइव करते हैं। ओके, अब एल्फ्रेड को जाके अलग से ढूंढना पड़ेगा लग रहा है। ओह, गिनते हैं कौन कौन मरा। उबा, सोमा, हुंडोल्ड, ये तीन लोग मर चुके। ओके, ये ऐसा एपिक क्लोज टाइप का, मतलब एंडिंग के बाद का। एंडिंग हमने 2 एपिसोड पहले किया था, एवोर की जो मेन स्टोरी एंडिंग। The city is ours. Wessex will follow. Good from Jarl. We're not without losses. Some of them grave. Their king is fled. His patsy struck down. Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here. Guthrum, hear me. Soma is... She's gone. Soma? Dead? इसको पता नहीं था। Gone to the endless feast, and is the better for it. We should send off our death. इसे क्या हो गया? ये कौन है? लूफिना है। ओके, I'll speak to my allies. I must speak to those still living. एक बार बात करके आते हैं। It is done, Brodir. You fought well. I saw him, Eivor. In my darkest moment, Brothir stood beside me. ब्रोथिर इसका ब्रदर है। And all was as it used to be. And then the battle ended. There will be other battles. Aye. And there you'll find me, Eivor.
in amongst the blood and death, Brother at my shoulder, until the Valkyries claim. You have given me more than I would ever have asked for. Keep him in your thoughts. For when a man is mourned, his deeds cheered and his songs sung. Okay. सोमा हुंडोल ये अच्छा योर भी मर गया. Okay, fuck. Lufina. Gods, I did not know. Is he? Hush. What good can words do, Eivor? Keep to silence. For what days I was given to spend with you. For each breath that carried your sweet whispers. No more. Your fingers in my hair. Goodbye, my only. My heart. ओके तो योर और लुफिना हमारे यॉर्विक के एलाइज थे. उसमें से एक मर चुका है. इसका क्या बोलना Your है? first battle, Ellerich. You fought well and with honor. Is this the glory you deign seek? You can keep it. I saw Hunwald die, the light dim in his eyes. You will never be the same. But you will... I have wasted so much time in pouting like a child. ओके इतनी एलाइज ये विली एंड ओके थोड़े से और बचे. Erke, you were Stowe is taking matters hard. You know how sensitive he is. a man of faith and stout morals. Small wonder he is tormented. His support for you has taxed him hard. I will take him back to London. Maybe he will find some comfort. You are his comfort, Erke. Not the city you watch. ओके ऊपर कौन है ये? You're not injured, Tefta. Bruises, that is all. I've taken the Lord into my heart, and he watched over my sorry bones. Those who fell sit beside him. And what of my heathen friend? I used to believe in damnation for all who turned from his light. But there is a wondrous communion in friendship. Even though your godson preaches peace. And we shall do that, Christians and pagans saw. Your Christ would smile at that, I think. Your Freya would too. ओके वो एक आदमी है जो सारे गॉड्स पे बिलीव करता है, जो पीछे है, जिससे हमने अभी बात की, इसलिए उसके डायलॉग्स ऐसे थे. You think there will come a day when winning will not be enough? Well, you can always fight with me if you want to taste crushing and... My very presence would make that impossible. Enjoy this victory, Eivor, wherever it brings you. Only a coward thinks... ओके स्टोव. My thanks, though. You came to my aid. Still, it breaks my heart to look upon what we've done today. Was it the right choice? If Alfred had his way, there would never be friendship between Norse and Saxon. You fought for peace. I wish I could. ओके डियरलाफ जो प्रीस्ट है वो कहीं नहीं दिख रहा है स्कोप शायर का, बट ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं. My heart is heavy. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? यस और क्या. Yes, there's nothing more to say. ओके तो जो हमारे 3 एलाइज मरे हैं ये बैटल में फॉल हुए, उनको शायद हाँ उनका फ्यूनरल. To their great reward. Will you do the honors? Nothing awaits them. They lived, they died, and now their bodies will burn to cinders. Their saga ends here. Well, do not share that with them. Victory is ours. But it came at a great cost. Soma Jarlskona, who stood at Guthrum's right hand. She will live on in our memories, from now to the end of days. And to Hjor, warrior, husband, and a friend, he made the ultimate sacrifice. I here repay it. And to Hunwald, whose kind heart has now led him to his father's side. May his God welcome him with open arms. Let us send them on their way.
all our beloved dead, our fallen warriors, and Okay. speak to their end. पीछे कुछ रैंडम कैरेक्टर्स को भी डाल के रखा है जो लोग मर गए. दैट इज नाइस. अच्छा हुआ कि उन्हें भी दिखाया एटलीस्ट. ओके. उन सबके लिए झुंड में एक बड़ा सा पायर बना दिया. पायर करके कुछ बोलते हैं वो लोग इसे. अब मैं ये सोच रहा हूँ किंग एल्फ्रेड का क्या. चिपे हैम. ओके, ये यहीं पे तो अभी फाइटिंग हुई थी ये जगह पे. अच्छा, हमारे एलाइज वापस जा रहे हो क्या? तो मुझे लग रहा है एवोर अकेले जाएंगे फिर एल्फ्रेड को मारने, ऐसा कुछ होगा. गुथरूम बैठा हुआ है इधर. Guthrum, When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? he was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping, spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not soothe you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace? I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I've made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it, a plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to Swanborough and tell her of Hunwald's fate. Okay. Better the news comes from me than a stranger. अच्छा, स्वानबरो उसकी फियांसे है हुंडवर्ल्ड की. अच्छा, वही हमारा मिशन है. ओके, ये कैसा मिशन है? किंग एल्फ्रेड भी नहीं मिला है. ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट का भी आखिरी बंदा बचा है. बट चलते हैं, जो मिशन है वो कंप्लीट करते हैं. उसको पता नहीं है अभी तक. Eivor? Swanborough, I... No. Gods, no. Don't say it, please, Eivor. Don't say it. I am sorry. Oh! My own one. No! My poor swan! Oh, gods!
He fought bravely and turned the tide to secure victory. Your dear Hunwald died a hero, and will be so remembered. Oh, gods. I know he would have fainted to hear such praise from your lips. Thank you, Eivor. Thank you. He walks among warriors now. Yes. The lucky man. I imagine he does. I know words are poor salve for a wounded heart. I will leave you to mourn, and know that we are here for you, always, should you need us. Okay. Report to rendezvous. Hello, Eivor. Please, brother, tell us another. Yes, one more. And only because you all have such good taste. Now, Eivor, there you are. I have something for you. A message. Quite strange. A letter, new quest. इससे बात करते Something हैं. for me. What is it? A letter requesting your presence in the southwest. A village called Athelney. Nothing strange about a summons for me, is there? It is not the recipient I find strange. It is the sender. The letter is signed a poor fellow soldier of Christ. Ah, our mysterious partner. For a short time, I hoped it might be Basim feeding us the names of these targets. He seemed the most likely man, for a time. Only one way to discover the truth. Thank you, Hytham. I will take care of this. ओके अब पुअर फेलो सोल्जर ऑफ क्राइस्ट ने एवोर को कोई विलेज में बुलाया है एंड ये वही कैरेक्टर है जो हमें ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के लोकेशन दे रहा था. ओके तो ये फाइनल ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट का लोकेशन देने के लिए बुलाया होगा हमें. पहले आके रणवीर से बात करते हैं. Good day. Hamptonshire has fallen, and with it the kingdom of Wessex. But the cost was great. Maybe too great for all we gained. Rest then. You have earned it. On the backs of so many. Time will tell if it was worth it. ओके अच्छा हैम्पशायर हम जीत चुके हैं. नाइस. तो पूरे इंग्लैंड में एलाइज बन चुके हैं. हैम्पशायर में अच्छा वो शायद अभी वहाँ का लीडर बन गया होगा गुथरूम जो है. नाइस. इंग्लैंड इज पैसिफाइड. यू हैव पैसिफाइड ऑल ऑफ इंग्लैंड बट देयर हैव you have not seen all the wonders in this world. Explore further. Okay, upgrade your settlement. Hunt the remaining order of the ancient. Complete the hidden ones. Okay, nice. तो ये एक फाइनल मिशन कंप्लीट कर लेते हैं जो हैथम ने दिया है. प्रॉबेबली ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट वन कहूँगा ये एपिसोड रैप अप करने से पहले. ओके ये इधर ही है. कौन सा ये फास्ट ट्रैवल करके जाना पड़ेगा. एंड ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स का मिशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम एसगार्ड का स्टार्ट करते हैं. वो भी ज़्यादा नहीं बचाऊंगा. प्रॉबेबली 1 या 2 एपिसोड एसगार्ड का जो भी मिशन है. फेनरिर का बॉस फाइट रहेगा उधर. फेनरिर जो वुल्फ था. फेनरिर वर्सेस ओडिन. ओडिन ऑब्वियसली हम रहेंगे. एवोर. ओके गाइस हम ऑलमोस्ट वो विलेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो पुअर फेलो सोल्जर ऑफ क्राइस्ट ने हमें बोला था आने के लिए. वो रहा जो भी. देखते ये कौन है. All right there? Yes, hello. I do not mean to intrude, but I am looking for someone. And who would that be then? I do not know exactly. Well, that'd be why you ain't found him. But you're free to pass the time just here if you like. Thank you. ओके इसकी बेकरी है. ब्रेड बना रहा है वो.
These are soul cakes, love. Do you know soul क्या cakes? एक दिन पूरा सो गया वो उधर? They're small things, size of a lumpy fist, so they'll bake fast. Keep your eyes sharp. And the butter, do I baste them? What the fuck? We leave the butter for meal time. I look forward to it. Right then. I'll leave you to this. If you need me, I'll be doing the washing up next door. तो यही होगा poor fellow soldier of Christ. Down from your former work, Lord. As their guest, I volunteer to help with the daily chores. They offer me a bed. I tend the cakes. Do they not feel strange giving orders to their king? Or do they know? That knowledge would benefit no one. I read your message. You went through a great deal of trouble to obscure yourself as this poor soldier of Christ. As I remember, you even sent yourself one of these letters in Winchester. A clever touch. The order wanted me dead. I had to be careful. You said you knew nothing about the order then, pled ignorance. But you knew everything. Their names, their schemes. Would you join me for a walk? You look well, Eivor. I am. The wars have ended, and my settlement thrives. The wars have not ended. You have simply stopped fighting. But men are brewing plots in mead halls and bedrooms. You will see. And how are you, Alfred? Getting used to the idea of being unremarkable? I am well. Better than I expected. In this exile, I have found a somewhat nourishing peace. Each morning, I am awakened by the sun and growling cormorants. I bathe in the chilly water of the marsh. I eat from shrubs and drink from buckets. It is a good life. Simple. Blessed. I've never been so far west. I find it quite peaceful here. Calming. I have traveled a long way to hear one name, Alfred. Who is the Orta's Grand Magister? Tell your shadowy friends that England is swept clean. Your work is done. You? Grand Magister was not a title I desired. It passed to me on the death of my brother. From my father before him. Defilers of God's majesty and grandeur. I was their master, and I loathed them. With Goodwin, I set a plan in motion to destroy the Order from within. But my troubles with the Danes delayed that plan. But your trouble with this Dane was what led to their demise. You are Norse, are you not? You have a good ear. I owe you my thanks, Eivor. For that, I give you this. The key to my study. That you may better understand the good you have done. With the Order all but destroyed, you have made room for a greater idea. One to take its place. A universal divine order, inspired by God for the betterment of man. With a poor fellow soldier at its head. You have saved England, whether or not that was your intent. Now let England save you. England is no more, Lord. You are the last of her kings, and yet you have no kingdom. Look around you. God's works are wondrous. They cannot be ignored, nor resisted. In time, all those who accept God will flourish, and all those who defy him will fall away. Should you remain in England, you too will one day be her subject. Oh, bloody crumbs! The cakes are burned. Where is that man? That man! Where have you gone? Damn. That may have earned me a night of washing linens. I do not know if we shall meet again, Eivor. God willing, we will. As one lord to another, perhaps. Okay. I'm coming, my lady. I'm here. नाइस, बढ़िया. काफी अच्छा ट्विस्ट था. आपको बता तो एक्चुअली में इधर हुआ क्या.
Alfred gave me a key to unlock his study. Somewhere in Winchester. ओके तो एक्चुअली में हुआ ये कि जो एल्फ्रेड था उसका फादर ऑर्डर ऑफ द एंशियंट्स का लीडर था और उसके मरने के बाद उसका ब्रदर ऑर्डर ऑफ द एंशियंट का लीडर हुआ और उसके मरने के बाद बाय डिफॉल्ट एल्फ्रेड ऑर्डर ऑफ द एंशियंट का लीडर हुआ बट एल्फ्रेड को ऑर्डर ऑफ द एंशियंट्स पसंद नहीं थे लेकिन वो क्योंकि वो खुद लीडर था वो खुद होकर उन्हें मार नहीं सकते थे इसलिए उसने एक फेक नेम फेलो पुअर फेलो सोल्जर ऑफ क्राइस्ट करके एक ये बनाया उसने और वो मैसेजेस और लोकेशंस देता रहा एवोर को और एवोर एक एक करके एलिमिनेट करता रहा एंड फाइनली बस ये जब अकेला यही बचा रहा और बाकी सारे ऑर्डर ऑफ द एंशियंट्स को हमने मार दिया तो उसने खुद बताया कि वो मतलब वही था लीडर करके और उसने जो एक मेडेलियन होता है जो हम नॉर्मली हैतम को जाके देते हैं वो हमें दे दिया एंड उसका एक सीक्रेट स्टडी था उसका भी की हमें दे दिया ताकि हमें क्या पता चले मुझे तो प्रोबेबली लग रहा है उधर जो थॉर के आर्मर सेट का फाइनल पीस है जो क्लोक है जो हमें अभी तक नहीं मिला है वही होगा उधर ओके तो काफ़ी बढ़िया ट्विस्ट था एंड ये देख के मुझे थोड़ी ओडिसी की भी याद आ गई क्योंकि ओडिसी की भी जो मेन ऑर्डर ऑफ द एंशियंट का हेड थी वो उसे भी हम लास्ट में मारते नहीं है बट वो थोड़ी अलग स्टोरी थी जस्ट टू से दैट मैंने बता दिया ये रहा एल्फ्रेड किंग एल्फ्रेड या नाइस एंड उसने अपने किंगडम वगैरह छोड़ के वो इधर एज अ कॉमन मैन जी रहा है फिलहाल के लिए ओके नाइस तो अभी कोई कुछ भी बचा नहीं है बस एक रिटर्न द ऑर्डर ऑफ मेडलिडियंस टू हैतम ओके एक बार ये एरिया देख लेते हैं वापस जाने से पहले केक्स बना रहे हैं इधर ओके बढ़िया Here you are, Hytham. The last of the Order's sigils. You will find King Alfred's among them. King Alfred? Did our poor fellow soldier lead you to his hiding place? He did, for they were one and the same. Our poor fellow soldier of Christ was the Grand Magister of the Order of the Ancients. He turned on his own order. Fascinating. Not turned so much as trampled. His devotion to Christ and what he calls a universal order set him against them from the start. With all sincerity, he loathed the title and the duty he had inherited and wished them destroyed. Wonderful. With his abdication, the last stronghold of the Order has been dismantled. All that remain are scraps here and there. And you, Eivor. Now that you have seen our enemy and you understand our cause, I wonder if you would join us. Become a hidden one. Was this your ultimate goal, Hytham? A trial by fire? It is a kind offer, but I do not believe we fight for quite the same cause. Your creed demands that you keep your triumphs hidden. I prefer my glory to be in plain view for all to see. If I taught you our creed, if you spent time with it, it could open your mind to another view. Another view is always welcome. But to live without celebrating one's glory and honor and achievements is not a life for me. But know this. I would give my life in a moment for those I love and who love me in return. All here. Including you, my friend. I understand you well, Eivor. Very well indeed. ओके नाइस तो हैतम ने एवोर को ट्राई किया रिक्रूट करने का असैसिन्स क्रीड में ब्रदरहुड में बट एवोर ने हम्बली डिनाई कर दिया नाइस बिकॉज वो असैसिन नहीं है ऑब्वियसली वो एक वाइकिंग है अदर देन दैट तो फाइनली इंग्लैंड हम पूरा कॉन्कर कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ द एंशियंट्स के भी सारे मेंबर्स को हमने मार दिया इंग्लैंड में पूरे अपने एलाइज बन चुके हैं सो या एक काफ़ी बढ़िया सी इंग्लैंड की भी एंडिंग हो चुकी है उसके अलावा ये जो गनर दिख रहा है इसका एक मिशन चालू हो चुका है ये डेफिनेटली एक ही मिशन है गनर का एंड वो वही है उसके मैरिज का तो वो मैरिज करना चाहते हैं और अपने जो सेटलमेंट में एक फेस्टिवल टाइप का हम सेलिब्रेट करेंगे तो वही गनर की मैरिज का एक फेस्टिवल टाइप का जो भी है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे एंड एक लास्ट मिशन एसगार्ड का मिशन जो बचा हुआ है ये रहा ये गनर का मिशन स्पीक टू गनर एंड रिटर्न टू एसगार्ड तो ये फेनरिर वाला बॉस फाइट रहेगा इसमें तो ये दोनों हम नेक्स्ट एपिसोड में रैप अप करने का ट्राई करेंगे एक 1 आवर का एपिसोड करके वो भी कर देंगे तो एक्चुअली में हम सब कुछ कवर कर देंगे कुछ बचेगा ही नहीं एंड में
ट्राई करता हूँ थॉर का हैमर जो म्योनियर है वो भी मैं ला के रखता हूँ। उसके लिए हमें वापस नॉर्वे जाना पड़ेगा, बट हम फाइनली वो ले सकते हैं, तो वो भी मैं लेके रखूँगा एंड नेक्स्ट एपिसोड में वो भी आपको दिखाता हूँ। वही यूज़ करके फाइट करेंगे, वो और गंगनियर यूज़ करके हम फेनरिर को हराएंगे। ओके, सो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।